Dear students, assalamu alaikum to all of you in this video. As class 12 subject math topic inverse of a matrix. Dear students, as you know in the previous lectures or previous video, we learned how to find the how to perform the elementary operations or elementary transformations on a square matrix. जैसा कि आप जानते हैं कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन चाहे वो रो ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन हो, वो सब इसीलिए हमने सीखा कि हम कैसे एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें. हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. नाउ if we have a square matrix, let A is equal to Aij be a square matrix of order m. If there exists another matrix B of same order m, such that product AB is equal to product BA is equal to I. यानी अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है ऑफ ऑर्डर M, अगर इसी ऑर्डर की एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो मैट्रिक्स B है ऑफ द सेम ऑर्डर, such that AB is equal to BA is equal to I means identity matrix of the same order. I means identity matrix. तो तब हम कह सकते हैं कि B is inverse of A. Then we can say that B is called inverse of A. Denoted by A inverse. I say A inverse. या हम ये भी कह सकते हैं कि A is invertible matrix. For example, if we take the example to understand this, we will take example. If A is a matrix, square matrix 2, 3, 1, 2, and B, there exists another matrix B such that B is 2, -3, -1 and 2. These be the two matrices. We perform A into B. First A into B, matrix 2, 3, 1, 2. This is A into B, matrix 2, -3, -1 and 2. We will perform their product. What will be the product of these two matrices? These are of the same order, square matrix of order 2 or 2 cross 2, 2 cross 2. These are two square matrices, so we can perform their product. So first row and first column, 2 into 2, 4, 3 into -1, that is -3. First row, second column, 2 into 3 -6, 3 into 2 +6,
1 in second row first column 1 into 2 2, 2 into minus 1 minus 2, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 1 इंटू माइनस थ्री 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू 4. सो ए इंटू बी हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी 4 माइनस 3 1 माइनस 6 प्लस 6 0 एंड 2 माइनस 2 0 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू आई. ए इंटू बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सूरत में हमें आ गई मैट्रिक्स. तो इसी तरह से अगर हम बी इंटू ए करेंगे बी इंटू ए फर्स्ट हम ये लिखेंगे बी वाली मैट्रिक्स 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 1 2. These are of the same order, so product of these two matrices is also defined. They are both square matrices of order 2 or order 2 cross 2. This is also 2 cross 2. This is 2 cross 2. So product is defined. So make the product is 2 into 2 4 minus 3 into 1 minus 3. Second first row and second column 2 into 3 6. Minus 3 into 2 minus 6. This matrix will be of the same order. Second row and first column minus 1 into 2 minus 2 plus 2 into 1 plus 2. इसी तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम का ज़रब माइनस 1 into 3 minus 3 2 into 2 4 plus 2 into 2 4. So this BA is equal to matrix 4 minus 3 1 6 minus 6 0 minus 2 plus 2 0 plus 4 minus 3 1. So this is also identity matrix of order 2. This is also identity matrix of order 2. This is also my identity matrix of order 2, as A is of order 2, B is also order 2. So this implies that A into B is equal to I and B into A is also equal to I. So AB into BA is equal to I. This is identity matrix. So we proved that AB into BA is equal to I. In this case we can say that B is inverse of A. So this implies that B is inverse of A. B is inverse of A, or we write B is equal to A inverse. So this is inverse, or we can say that A is inverse of B. B inverse is equal to A या B is equal to A inverse. जो B मैट्रिक्स यहाँ हमें मिलती है ये A का इन्वर्स है. तो इस तरह से हम इन्वर्स निकाल सकते देख सकते हैं कि क्या ये इसकी इन्वर्स है. So you should remember that if A into B, if there is a square matrix of order M and if there exists another matrix of same order, that is matrix B, if A into B is equal to B into A is equal to I, then we can say that B is inverse of A. B is inverse of A, या A inverse जो है वो B matrix है, या A is equal to B inverse. तो इस तरह से हमें ये पता चलेगा कि क्या ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. इन्वर्स एग्जिस्ट्स ओनली इफ AB into BA is equal to I. तो also inverse of square matrix, you should remember inverse of a square matrix is unique.
inverse of square matrix is unique. This is uniqueness of inverse. Uniqueness of inverse. Uniqueness of inverse. Inverse of a square matrix is unique. Inverse of a square matrix, if it exists, is unique. तो ये बात भी आप प्रूव कर सकते हैं. कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स लेट A is equal to Aij be a square matrix, of order m, ये यूनिकनेस, ये एक समझो कि एक थ्योरम है. यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक. तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसका प्रूव भी हम कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लेट ए इज इक्वल टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m. चलो, इफ पॉसिबल let B and C matrices be the two inverses of matrix A, These be the two inverses of the matrix A. Now since B is inverse of A, C is inverse of A. Now, since B is inverse of A, therefore, by definition of inverse of A, then if B is inverse of A, then what is AB is equal to BA is equal to I. Say this is equation first. Also, C is inverse of, by supposition we have supposed that B and C, they are two inverses of A. By definition, if B is inverse of A, then AB is equal to BA is equal to I. Also, C is inverse of A, then if C is inverse of A, then AC is equal to CA is equal to I. ये भी I के बराबर होगा. Name this is equation second. So this is by definition of inverse. AB into AB is equal to BA is equal to I. Identity में also if C is inverse of A, C is inverse of matrix A, then by definition AC is equal to CA is equal to I. ठीक है. Now we can write, अगर हमारे पास कोई B मैट्रिक्स है, यही B मैट्रिक्स जो हमने ली, B इसको हम लिख सकते हैं, B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं B into I. यानी ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि B इंटू आई इज इक्वल टू बी या A इंटू आई इज इक्वल टू ए. तो इसी तरह से B को हम लिख सकते हैं B इंटू आई. नाउ B इंटू आई विच इज इक्वल टू B इंटू आई. B इंटू आई के बदले हम लिखेंगे यहाँ पर ये AC लिखेंगे, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं BA इंटू सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं BA इंटू सी, और वी कैन राइट इट BA where BA is equal to I by equation first. BA is equal to I
this is equal to I into C, because BA is equal to I by equation first, by equation second. B by equation first, BA is equal to I. So BA के पहले हम I लिखेंगे और ये C ऐसे ही रहेगा, और I into C is equal to C, which is equal to C. So B is equal to C. So B is हमने ये कहा कि there are two matrices B and C, but B is equal to C. This shows that the inverse of square matrix is यूनिक. यानी हमने कहा था कि B और C इसके दो इन्वर्सेस हैं, लेकिन B और C बराबर है. This shows that B is unique. There is only one inverse of the square matrix A. So this shows the uniqueness of the matrix. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. खुदा हाफिज़.